Assalamu-Alikum and welcome back. So our today topic is about family budget method. So what is family budget method? According to this method, the aggregate expenditure of the family on various items are used as weights. Current year prices are converted into price relative values of commodities in the base year, and the product is divided by the sum of weight. So इसका फार्मूला हम देख लेते हैं. For this we have sigma Pn, and Pn we already know that the Pn represent the current prices, divided by P naught, which is the base year price. So P naught into W, or we can say weight, and whole divided by sigma W, and multiply by 100, or we can say this is equals to P we write this formula in this way as well: sigma W into I divided by whole divided by sigma W. So here how we find the W values. So W represents the weight, and it is equals to P naught and Q naught. P naught and Q naught represent the W, and I represent the Pn by Q, P naught into 100. I represent the values of P in a N divided by P naught into 100. सो हमने ओवरऑल इस इंडेक्स नंबर के चैप्टर में कितने फार्मूलेस पढ़े हैं. एक तो हमने पढ़ा था फिक्स बेस मेथड का फार्मूला, जो कि प्राइस रिलेटिव विच इज पी एन बाई पी नॉट इंटू 100. नेक्स्ट हमने पढ़ा था चेन बेस मेथड के लिए फार्मूला. एक हमने पढ़ा था प्राइस रिलेटिव का फार्मूला. प्राइस रिलेटिव का फार्मूला पढ़ा था पी एन बाय
पी नॉट इंटू 100, ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव का फार्मूला था। सेकंड हमने पढ़ा था चेन बेस मेथड और वी कैन से लिंक रिलेटिव। तो लिंक रिलेटिव का फार्मूला भी हमने डिस्कस किया था अपने इस चैप्टर में, which is Pn divided by Pn minus 1 into 100। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वेटेड इंडेक्स नंबर का, जो कि लास्ट फार्मूला था। लास्ट का फार्मूला था सिग्मा पी एन बाय, लास्ट का फार्मूला पढ़ा था हमने सिग्मा पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा पी एन क्यू नॉट इंटू 100, सॉरी पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100। फिर हमने पढ़ा था फिशर का फार्मूला। फिशर के फार्मूले में हमने पढ़ा था, नहीं उसके बाद हमने पाशे का पढ़ा था। पाशे का फार्मूला था सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सिग्मा पी नॉट क्यू एन इंटू 100। और फिर जो लास्ट में हमने पढ़ा था फिशर का फार्मूला, वो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन था और दोनों का स्क्वायर रूट लेके, लास्ट पेयर और पाशे के फार्मूला दोनों का स्क्वायर लेके फिशर का फार्मूला था। उसके बाद हमने मार्शल एजवर्ट फार्मूला पढ़ा था, जो कि उसको सम करना था, लास्ट पेयर और पाशे का फार्मूले को सम करना था। फिर हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फार्मूला पढ़ा था, जो कि था पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100। उसके बाद हमारा लास्ट फार्मूला जो कि इस क्लास में हमने डिस्कस किया, विच इज फैमिली बजट मेथड। और फैमिली बजट मेथड में हमें पता है कि आई जो है वो क्या प्रेजेंट करता है, आई प्रेजेंट दी पी एन बाई पी नॉट इंटू 100 और डब्ल्यू जो है वो पी नॉट क्यू, पी नॉट और क्यू नॉट दोनों को प्रेजेंट करता है। सो ये फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए इस चैप्टर में। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर को और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर से प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।